Hi guys, welcome to another lecture by Life Science Exam Notification channel. This is our part 3 of cell biology course. In this lecture, I am going to discuss the component of plasma membrane. So basically, we will talk about the two different components of plasma membrane, that are lipids and proteins. First, in this lecture, I will discuss about the lipids. It's a lengthy lecture. So I will be completing the components of plasma membrane in 3 classes. Our very first class is about lipids. Then in the next chapter we will discuss about the properties of cholesterol and its nature and its uses in the plasma membrane. And in the third lecture of this plasma membrane components, I will discuss about the proteins, integral proteins, peripheral proteins, and others. So first I will advise you all to watch the previous 2 lectures if you haven't watched them. So please watch them before starting with this lecture, as you won't be able to understand this lecture without the previous 2 lectures. So the very first component of the plasma membrane are the lipids. As we have studied in the previous lecture, that lipids are amphibitic molecules. What do we mean by amphibitic molecules? Amphibitic molecules are those molecules that have both a hydrophilic part and a hydrophobic part. So we have seen the structure of a lipid molecule in the previous lecture. We have seen a hydrophobic tail and a hydrophilic head. So the lipids are amphipathic in nature. They may be fully saturated. What is meant by fully saturated? Fully saturated means that they don't have any double bond in their fatty acid chain. And they may be unsaturated, meaning that they may contain a double bond in their chain. Unsaturated lipid may have one double bonds, monounsaturated, or more than one double bond, that is polyunsaturated fatty acids. So first we have classified lipids on the basis of the presence or absence of double bond, that is saturated or unsaturated lipids. Further, unsaturated lipids are classified into monounsaturated और polyunsaturated. सो मोनो में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है फैटी एसिड चेन में, जो कि हमारे ग्लिसरॉल या फिर स्फिंगोसिन बैकबोन से अटैच्ड होती है फैटी एसिड चेन. हम स्फिंगोसिन ग्लिसरॉल बैकबोन के बारे में हम अपकमिंग स्लाइड्स में अभी पढ़ेंगे. देन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अटैच्ड होते हैं इन अनसैचुरेटेड lipids that have more than one double bond. So okay, next the lipids are classified into phospholipid, glycolipid, and sterols. So we will talk about the classification now. So lipids are first classified into simple, compound, and derived lipids. Simple lipids are further classified into fats and oils and waxes. And compound lipids are classified into phospholipid, glycolipids. Further, we can classify phospholipid into glycerophospholipid or sphingophospholipid. So, as we can see here, the name indicates glycerol. Glycerol means a carbohydrate molecule. Phospho means a phosphate group and a lipid molecule. So, glycerophospholipid. Next, sphingophospholipid. From sphingophospholipid, we can see sphingosine is an amino acid. Phospho matlab phosphate group and a lipid molecule attached to them. So here in sphingophospholipid we have a sphingosine backbone, and in glycerol phospholipid we have a glycerol backbone. Further, as we can see here, glycerophospholipid are classified into phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl serine, and phosphatidyl inositol. We can discuss about all these
in the upcoming slides. So the classification of membrane lipids we have studied in the previous slide also. Here similar thing is shown. Membrane lipids are classified into phospholipid and glycolipid. Here we can see phospholipids are further classified into glycerophospholipids and sphingolipids. Glycerophospholipids, as I have talked, glycerophospholipids have a glycerol backbone and sphingolipids have a sphingosine backbone. Further, in glycerophospholipid, two fatty acid chains are there and a phosphate group to which a alcohol group is attached. In sphingolipids, we have a sphingosine backbone to which a single fatty acid chain is attached. In glycerophospholipid, we can see two fatty acid chains are attached, whereas in sphingosine, there is only a single fatty acid chain and a phosphate group and a choline. Okay. Next is glycolipid. Glycolipids में हमने sphingolipids similar sphingosine backbone fatty acid chain and a mono or oligosaccharide structure. We can see here alcohol, choline and mono oligosaccharides. These are called as head groups of these structures. So in this table we can see head group X of the glycerophospholipids. Here we can see glycerophospholipids. This is an alcohol. This is a X group. So alcohol may be of these types. So if it is a single in place of alcohol, only H hydrogen is attached, we can see it is a phosphatidic acid. If the ethanol amine group is attached, X group is ethanol amine, we can say it is a phosphatidyl ethanol amine. If a choline group is attached, we can say it is a phosphatidyl choline. Phosphatidyl choline is also known as lecithin. Further, if a serine group is attached, we can call it phosphatidyl serine. And a glycerol group is attached, we can call it phosphatidyl glycerol. Further, phosphatidyl glycerol structure we can see here. This is the phosphatidyl glycerol structure. It is a diphosphatidyl glycerol because a glycerol is present first, then is a phosphate group and then a glycerol head group. So this structure, example of this structure is cardiolipin. Then is the myoinositol. This is an example of phosphatidyl inositol. Okay. So as I have told you in the previous slide also, this slide also contains the structure of phospholipids. They are made up of 4 different components: an alcohol backbone which may be glycerol or sphingosine, a fatty acid molecule, a phosphate group and an alcohol attached to the phosphate group. So as we can see here in the diagram, if a glycerol backbone is present, there are 2 fatty acid chains attached to it. And if an sphingosine backbone is there is only a single fatty acid chain. Next, in both the structure, a phosphate group is present. Next to phosphate, there is attached an alcoholic group. In sphingosine backbone structure, a choline group is present only, choline as an alcohol. While in glycerol backbone structure, alcohol may vary like for ethanol amine, inositol, etc. So based on which they are named. So coming to the next slide, glycerophospholipids. These are the main phospholipids in animals. They have a glycerol backbone. Glycerophospholipids are also known as phosphoglycerides. So sometimes they may ask in question which of these is a phosphoglycerides. So don't be confused. Phosphoglycerides is the name of glycerophospholipids only. So please keep in mind that it is another name of glycerophospholipids. Don't be confused here. Next, most common lipid in the plasma membrane means
Glycerol phospholipids are the most common lipid of the plasma membrane. They are found in majority. They are classified according to the nature of its head group, as I have told. They are phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl choline, phosphatidyl inositol. So they are based on their structure of head group or nature of head group. Further, if we talk about phosphoglyceride or glycerophospholipids, they are phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine, and phosphatidyl serine. So phosphatidyl choline, here, which is the head group? Choline is the head group. It is present in the outer surface of lipid bilayer. This question is asked in many competitive exams, that which of these is present in the outer surface of lipid bilayer, outer leaflet of lipid bilayer. So we can see phosphatidyl choline is present in the outer surface of the lipid leaflet. It is the most abundant glycerophospholipid in the plasma membrane. At neutral pH, it has no net charge. Okay, means zero charge at neutral pH. What is neutral pH? The neutral pH is 7. Keep in mind. Next, phosphatidyl choline is absent in bacteria. Next, if we talk about the second type of phosphoglyceride, that is phosphatidyl ethanolamine. फोस्फेटाइडाइल इथेनॉलामीन में हमारा हेड ग्रुप जो होता है इथेनॉल अमीन होता है. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मिक लीफलेट पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मतलब साइटोप्लाज्म वाली साइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लीफलेट, उस पे, मतलब इनर लेयर पे. दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स. ओके, एंड मेजरली दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सिस्टम्स. They consist of 25% of phospholipids, and at neutral pH they also have no net charge. So phosphatidyl choline and phosphatidyl ethanolamine दोनों में हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों में ही हमारा नेट नेगेटिव चार्ज 0. नेट नेगेटिव तो बोलेंगे ही नहीं, नेट चार्ज जो है हमारा 0 है. So here we have covered 2 phosphoglyceride. Next, our third type of phosphoglyceride is phosphatidyl serine. यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था कि ग्लिसरॉल बैकबोन थी, उसमें 2 फैटी एसिड चेन थी, एक फॉस्फेट था और उससे एक अल्कोहल अटैच था. तो यहाँ पे कौन सा अल्कोहल अटैच है? सीरीन. तो ये फॉस्फोएट जो बीच में अटैच होता है ग्लिसरॉल के और सीरीन के बीच में, ये क्या बनाता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. और 2 फैटी एसिड चेन जो अटैच होती है वो कौन से लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होती है? ईस्टर लिंकेज के थ्रू. ओके, सो वी कैन रीड हियर इन द पॉइंट, हैव 2 फैटी acid attached to the first and second carbon of glycerol by ester linkage, whereas serine was attached to the third carbon of glycerol molecule by phosphodiester linkage. Okay, phosphatidyl serine is absent in bacteria. They have a net negative charge. Okay, in previous 2 we have discussed that they do not have net charge, but in phosphatidyl serine we have a net negative charge. They are found in the inner leaflet of plasma membrane. Okay, phosphatidyl serine कहाँ पे मिलता है? इनर लीफलेट पे. और जब वो फ्लिप होता है आउटर लीफलेट के साइड, वो एक्ट करता है एज ए सिग्नल फॉर अपोप्टोसिस. सो ये अपोप्टोसिस में काम करता है. हमारा फॉस्फेटाइडिल सीरीन इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है, बट अगर आउटर लीफलेट पे चले जाए तो ये कैंसर सेल की तरह वर्क करने लगेगा, कैंसर सिग्नल देगा और यहाँ पे अपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगी. ओके, सो फॉस्फेटाइडिल सीरीन स्पेसिफिकली हमें इनर लीफलेट पे ही मिलेगा. So our next structure is sphingospholipids. So sphingospholipid has a sphingosine backbone in them. They contain an amino alcohol sphingosine instead of glycerol. The amino group of sphingosine backbone is linked to fatty acid by an amide bond. So हमने वहाँ पे देखा तो कौन सा बॉन्ड था? एस्टर लिंकेज था. और यहाँ पे क्या है? एक अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है.
दे आर फाउंड इन द आउटर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेयर। कहाँ पे प्रेजेंट है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स? आउटर लीफलेट में, ठीक है, एंड इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट if we talk about the glycolipids, they can be derived from either from glycerol or from sphingosine, and lipid is attached by covalent bond here. Glycolipids are found in the outer leaflet of the plasma membrane and they have a carbohydrate exposed on the cell surface. क्या होता है? आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और इनका जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है वो कहाँ एक्सपोज होता है? सेल के सरफेस पे. So glycolipids can be classified into simplest glycolipid and complex glycolipid. सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड का हमारा जो एग्जांपल है वो सेरिब्रोसाइड से. इसमें क्या होता है? हमारा एक ही सिंगल ग्लाइको मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो कि हो सकता है हमारा कौन सा? ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज. देन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड में तो इसका एग्जांपल है गैंग्लियोसाइड्स. गैंग्लियोसाइड्स में क्या होता है? इसमें ब्रांच चेन होती हैं 7 शुगर रेजिड्यूज के. ओके, मतलब 7 कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज होते हैं जो कि एक ब्रांच स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. गैंग्लियोसाइड आर द मोस्ट अबेंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल. दे आर फाउंड इन सम अदर cell types also. So glycolipids play an important role in blood group determination. Okay, they help in maintain the stability of plasma membrane. Plasma membrane की stability को भी maintain करते हैं. Blood group determination में कैसे help करते हैं? जिसे हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये प्रेजेंट होता है हमारा. तो अगर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है या नहीं है, तो हमारा क्लासिफाई करता है कि एक ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है या फिर ओ ब्लड ग्रुप है. नेक्स्ट हमारा दे हेल्प इन सेल सेल इंटरेक्शन. सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, सेल की एंकरेज में हेल्प करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आर लास्ट टाइप ऑफ लिपिड्स आर स्टेरोल्स. स्टेरोल्स आर ऑल्सो आर टाइप ऑफ लिपिड. ये क्या होते हैं? प्लानर होते हैं और रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेरॉइड्स एल्कोहल. ओके, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा स्टेरॉल का? उसमें क्या होता है? एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड 4 फ्यूज्ड रिंग अटैच्ड होती हैं. स्टेरॉल्स नेचुरली कहाँ पे मिलते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं और फंजाई में भी मिलते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को. नेक्स्ट आर टाइप ऑफ स्टेरॉल्स. तो बेसिकली कहाँ पे इनकी लोकेशन है उसके हिसाब से ये क्लासिफाई किए गए हैं अभी तक. तो 3 टाइप के हम स्टेरॉल्स अगर पढ़ें मोस्ट कॉमनली तो हमारा जू स्टेरॉल्स जू मतलब एनिमल. तो जू स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स. एर्गोस्टेरॉल्स आर प्रेजेंट इन फंजाई में भी कहाँ? सेल मेम्ब्रेन में. देन फाइटोस्टेरॉल्स देख रहा है, फाइटो प्लांट, स्टेरॉल्स मतलब प्लांट स्टेरॉल्स, तो दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. अब जो स्टेरॉल्स का हम एग्जांपल देखें कहाँ पर प्रेजेंट थे, हमने देखा एनिमल्स में प्रेजेंट थे और इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल. एर्गोस्टेरॉल हमने देख ही लिया कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई में. देन फाइटोस्टेरॉल्स अगर हम देखें तो फाइटोस्टेरॉल्स प्लांट्स में प्रेजेंट है और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? बीटा सीटोस्टेरॉल, कैम्पेस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, स्टिग्मास्टिनॉल, एवेनोस्टेरॉल and brassica sterol. So these are type of sterols. Next in the upcoming lecture I will discuss about the cholesterol. जो हमारा है, हमने स्टेरॉल्स में ये कौन सा एग्जाम्पल है? जो स्टेरॉल्स का एग्जाम्पल है. तो कोलेस्ट्रॉल की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. सो ये थोड़ा डिटेल पोर्शन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का. इसके क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा और ये लिपिड ड्राफ्ट में कैसे यूज़ होते हैं, लिपिड ड्राफ्ट भी पढ़ाऊंगी मैं आपको. सो ये सब वहाँ पे कवर होगा. सो इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं. आई होप you will understand the lecture completely. If you don't
understand anything or you have any doubt, you can ask me in the comment section. And please share it with your friends so that they can the maximum benefit of these lectures. And please share it with the needy. So thank you guys. Subscribe to my channel for all latest notification of this course and other exams thing also, like I provide latest information of various exams. So please do like, share and subscribe. Thank you.